The 2009 Right to Education Act makes education the fundamental right of every child aged 6 to 14. However, not every child is accessing this right, especially those belonging to socially excluded groups, where age-old discriminations pose serious impediments. Socio-economic factors force many parents to rely on their children for childcare or work. In addition, discriminatory school environments and a negative attitude of parents towards education are common reasons for children to drop out from school. Indeed, it was caste-based discrimination coupled with steep poverty that forced 13-year-old Chandani to leave her school in the Rai Bareilly district of Uttar Pradesh. हम उस वाले स्कूल में जाते थे और हमारे साथ कहते थे कि तुम मांगता बढ़िया हमारे साथ मत बैठ के खाना खाओ, हमको बैठा देते थे। हमने सब जने खाते थे बैठ के, इसलिए हम जाने नहीं जाते थे उसको वाले स्कूल में। 10 तक पढ़े थे, उतने से ही छोड़ दिया था मैंने। Dropping out of school seriously impairs the potential of children like Chandani, committing them to the vicious cycle of poverty and exclusion. To try to address these problems of discrimination and dropout, PAC's partners have been working to empower school management committees, SMCs. ये SMC का प्रावधान राइट टू एजुकेशन में है और 11+4 सदस्य, जो 11 सदस्य हैं वो अभिभावक हैं। उसी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं। अगर जिन बच्चों के जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के अगर अभिभावक वहाँ पे रोज़मर्रा के कार्य में स्कूल के कार्य में अगर वो रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी सहभागिता बढ़ती है और वो विद्यालय को कैसे सुचारू रूप से चलाना है ये वो अच्छे से कर सकते हैं। In Uttar Pradesh, PAC's partners have been collaborating with SMCs and with the state government in special back-to-school programs and enrollment drives under Sarva Shiksha Abhiyan, the government's Education for Everyone program, to reduce absenteeism and dropout rates. Whenever in district and the block or panchayat and block and a village level, when the enrollment drive, this Sarva Shiksha Abhiyan enrollment drive took place, they actively took part. हम लोग उनको अपॉइंट करते हैं कि ठीक है आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको कुछ घरों की जिम्मेदारी है, आपको तय करना है कि इस गली में कितने आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने लायक हैं और अभी भी स्कूल शिक्षा से वंचित हैं। और वो डेटा हम सारा एकत्र करके रिपोर्टों के ज़रिए शिक्षा विभाग के साथ में साझा करते रहते हैं, जिसके बेसिस पे बच्चों को ट्रैक करने में कि कोई भी बच्चा समुदाय से स्कूल में आने से वंचित ना रहने पाए, तो वो ट्रैकिंग सिस्टम हमारा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। Supported by PACS, the School Management Committee in Chandani's village has been working hard to support the government's Back to School campaign. Jannatul Nisa is a mother of 7 and is one of the SMC members. She took it upon herself to go house to house, sensitizing parents about the school enrollment drive and the importance of education. अभियान चले स्कूल से हम जो है गए, सबको साथ लेके सारे बच्चों को नारा लगाते हुए जो है सारे बच्चे के माता पिता से जो है रिक्वेस्ट किए कि यहाँ आओ, जो है सब बच्चों का नाम लिखाओ। जो पढ़ाई बैठ जाते थे काफ़ी बच्चे यहाँ आ गए, हमारे जाने से काफ़ी बदलाव हुआ। In addition to the enrollment campaign, Jannat's SMC has also been addressing discrimination within the school and ensuring that all enrolled children get their entitlements like books, uniforms and midday meals. Thanks to this work, Chandani is now back in school, reassured that the school is now an inclusive space where she can learn, eat and play with dignity. With a strong network of empowered SMCs like this one, PACS is hopeful that universal, discrimination-free, quality education
will soon be realized in all the communities where PACS partners have been working as an entitlement for all and not just a privilege for the few.